So we have been trying to look at certain aspects of macroeconomics. हमने GDP, demand and supply, inflation, currency, money and financial markets ये वाली चीज़ें देखी. One of the very important and interesting concepts concerning our study of economics is open economy concepts, foreign trade, etc. ये बहुत interesting topic है, one of my most favorite. I love this topic. And to begin with, the first thing, the elephant in the room that we need to address is why do we need to do foreign trade? Why? Why can't an economy sustain itself? वो खुद को क्यों ना sustain करे? So what is the need for foreign trade? यूजुअली हम इकॉनमी, किसी भी इकॉनमी के रिसोर्सेज को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज इन एनी इकॉनमी. वन इज लेबर, अनदर इज कैपिटल. एंड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री वुड हैव बोथ ऑफ दीज. इट्स हाईली अनलाइकली कि एक ही होगा दूसरा नहीं होगा. इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग. बट economies differ in the quantity of both of these and the levels एक दूसरे के respect में. Usually one is relatively more than other. For example, India has large labor pool हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है. In fact, third world का low middle income countries, ये तमाम countries का it's usually labor pool which is large. Now compare that with Germany. Germany has relatively large capital. That doesn't mean Germany does not have any labor. It has, but comparatively more capital. Also, India also has capital, but comparatively labor is more. Now, basic demand and supply, market equilibrium cost, labor would be cheap in India. Supply of labor is more. Capital would be cheap in Germany. Supply is more. So, now that translates into something very interesting. The goods that are labor intensive, जिसमें बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे गुड्स हिंदुस्तान में चीपली बन सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा इंसान चाहिए काम करने के लिए. अब जिसमें ज़्यादा मशीनरी चाहिए काम करने के लिए, अब मशीनरी हिंदुस्तान में महंगी, जर्मनी में सस्ती, तो वो वाला प्रोडक्ट जर्मनी में सस्ता बनेगा. सो optimum use of resources would demand that it is better for India to produce labor intensive goods and export them to Germany, while Germany produces capital intensive goods and India imports it from them. So importing is not necessarily a bad thing. ये लगता है ना कि why are they producing Rafales etc. and why are we always that's good. When India starts producing, see, economics is not the only thing. We also look at sociology, we also look at defense, security issues, and then we realize that why should a country also produce weapons? But from purely economic perspective, purely economic perspective, India should not produce heavy machinery. Why? Why should it not produce? Because it can get the things from outside. It should play to its advantage. तो एडवांटेज यहाँ पे बड़ा टेक्निकल टर्म है. देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपैरेटिव एडवांटेज. ये जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया ना, दिस इज थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का डिस्क्रिप्शन डेविड रिकार्डो बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स में. होते हैं ना वो दिग्गज लोग, द पायनियर्स ऑफ अ फील्ड एंड द बिग नेम्स इन फिजिक्स में, Richard Feynman, Albert Einstein, Heisenberg, etc. So these are big names. Similarly, when we talk about economics, Adam Smith, then Keynes, and then Ricardo, etc. These are big names. David Ricardo, he kind of showed how England and Portugal, ये दोनों countries कैसे they would benefit if they would take use of this comparative advantage, if they would specialize and produce things they were having advantage in and then trade with each other. So in this case, जो Portugal है, they were able to make wine at a low cost. England was able to manufacture cloth at a low cost. So Ricardo predicted
कि तुम चाहो ना चाहो धीरे धीरे तुमको भी ये समझ आ जाएगा कि बेहतर क्या है, तुम खुद ही रिकॉग्नाइज करोगे इन फैक्ट्स को, एंड देन you would start trading with each other, producing the thing you are good at producing. And as time went by, England stopped producing wine, Portugal stopped producing manufacturing clothes, and both the countries saw that the mutual trade was beneficial, so they started trading with each other. ये जो happening है society में, जो हमने देखी हिस्ट्री में, कॉम्परेटिव एडवांटेज की थियरी जो है ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, इस फेनोमेना को, जो इंग्लैंड और पोर्टुगल के बीच में हुआ. एक और फेनोमेना जो हिस्टोरिकली हमने देखा है, द कंट्रीज दैट इंडल्ज इन प्रोटेक्शनिज्म यही हुआ, आत्मनिर्भर भारत बनाना, एक कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करना, बॉर्डर्स को क्लोज करना. सेल्फ सफिशिएंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर, व्हाई शुड देयर बी एन आत्मनिर्भर भारत, हैज अदर रीजन, सिक्योरिटी इश्यूज के साथ उसके हैं कुछ और इश्यूज भी. But from a purely economic perspective, protectionism would mean keeping barriers for trade. That is protectionism. These barriers can be literal physical barriers, Trump ki wall. They can be tariff. Usually it is tariff. Taxes वगैरह लगा देना, border पे ban लगा देना कि this product cannot be imported, etc. जैसे in around July or August 2023, government of India put certain restrictions on importing of certain electronic equipment. So that kind of thing would be protectionism. Now, why is it called protectionism? Because usually it is done under the garb of protecting local industry. बाहर की इंडस्ट्री को बैन कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी, अदरवाइज दे वुड हैव टू फेस द कंपटीशन ऑफ. यस, नाउ दिस इज एट टाइम्स रिक्वायर्ड एज वेल. It's not always bad. In fact, initially when economies are small, they should be protecting their nascent industry. Now, one of the reasons of fall of or deindustrialization of India in 1800s and early 1900s was exactly this. The British government did not protect Indian market. Now, what happened because of that? Indian artisans were not able to compete against Manchester cloth. इंग्लैंड से जो कॉटन मशीन मेड क्लॉथ आता था, दिन में वो 1000 शर्ट बनाते थे, यहाँ 1000 दिन में एक शर्ट बनाता था. कैसे कॉम्पीट करता है उसके साथ? अगर हिंदुस्तान के पास खुद की सरकार होती है, फिर इफ द गवर्नमेंट वुड हैव बीन इट्स ओन, इट वुड हैव प्रोटेक्टेड इट्स इंडस्ट्री एंड गिवन इट टाइम टू शिफ्ट टू मशीन मेकिंग इंडस्ट्री, राइट? सो गिव इट सम टाइम, गिव इट 5-10 days, है ना, sleep it over, and then the economy would have done better. So that's one more reason why you should have your own governments, because the governments protect the local industry. Now, protection in the long run is bad, law of comparative advantage, but initially good. Now, this is exactly why did India's service sector do good? Why did India's service sector do good? Because after Azadi, India started protecting its industry. Protected comes 90s. The local industry has matured, services sector की, software development, etc. That has been protected. अब वो mature हो चुकी है. अब क्या कर दिया? अब खोल दिया मार्केट, ओपन मार्केट कर दिया. Now they are competing international. TCS is competing at international level. Tata Consultancy Services and others. I think Infosys is also Indian, right? So there are different companies which are trying. At least they are holding. If I am not mistaken, business processing outsourcing is completely like dominated by India, and that in itself, that's why service sector contributes a lot to Indian economy, because it had matured. So now coming back to our discussion of comparative advantage, one more thing we see in history is when economies go with this protectionism, economies fail. Protectionism is usually unsuccessful. So if a country removes itself from international trade or government imposes tariffs, it would produce immediate local benefit. Like I told you, sometimes it is required, but over the long run, it's not a good solution. In fact, as a rule of thumb, ये याद रखो
कि market driven solutions are the best solutions in long run. You might need timely injection at times, that is fine, but usually market. And then there are certain things जिसके लिए वो externalities का concept आ जाता है. Certain things have positive externalities and others have negative. जैसे for example, why should government provide COVID vaccines? Because एक को वैक्सीन देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उससे. That person acts as a barrier, he cannot spread it further. तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है, अपना ही नहीं होता. So in such cases government should provide it, and negative externalities के time पे they should be banned, but that's beyond the scope of our discussion. Eventually that country which indulges in this protectionism, it would grow to be a disadvantage relative to other economies. And there is one more interesting concept. ये जो बाकी कंट्रीज है जिन्होंने ऐसा नहीं किया, they would be producing items at lower opportunity cost. ये जो protectionist country है, this would be at disadvantage compared to other countries. Why? Because this country would be producing at more opportunity cost, they would be producing at lower opportunity cost. अभी opportunity cost क्या होता है? What is opportunity cost? Opportunity cost नाम से तो है थोड़ा सा complicated मसला, but इसको समझना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. Opportunity cost would be value of what you lose when you choose between two or more alternatives. आपके पास 2 या 3 alternatives है. So choosing A alternative means a loss of say X. And choosing B would mean a loss of Y. So that is their opportunity cost as well. So it is the difference between the expected returns of each option. अब हमने जो बात की, इस बात में हम ये कह रहे थे कि अगर आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाते हैं, देयर इज़ अ हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व जो दिखता नहीं है. इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक मिसाल से समझते हैं. टेक फॉर एग्जांपल 2 countries, एनी 2 countries, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, एनी 2 countries. से फॉर एग्जांपल इन वन कंट्री 1 hour ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस 5 units ऑफ क्लॉथ और 10 units ऑफ वाइन. 5 units ऑफ क्लॉथ और 10 units ऑफ वाइन. फ्रांस में 1 घंटे में एक लेबर या तो 5 units ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकता है, अगर वो वाइन बना रहा होता तो 10 units ऑफ वाइन. टेक अनदर कंट्री, से यूएस में 1 लेबर कैन प्रोड्यूस 20 units ऑफ क्लॉथ इन 1 hour और 20 units ऑफ वाइन इन 1 hour. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? बड़ा सिंपल है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 unit ऑफ क्लॉथ इन फ्रांस वुड बी 2 units ऑफ वाइन. दैट इज व्हाट यू गेव अप ना व्हेन यू चोज टू प्रोड्यूस क्लॉथ. यू गेव अप ऑन 2 units ऑफ वाइन. सो प्रोड्यूसिंग 1 unit ऑफ क्लॉथ इन फ्रांस मीन्स यू गेव अप ऑन 2 units ऑफ वाइन. व्हाट अबाउट यूएस में 1 unit ऑफ क्लॉथ इज 1 unit ऑफ वाइन, बिकॉज 2020 हमने बोला. So by producing 1 unit of cloth, United States gives up on 1 unit of wine. So that is simply opportunity cost. Now what trading does is it leads to lowering of these opportunity costs. We are not going into the details how exactly that is. यहाँ पे हमारा मकसद बस इतना जानना है कि कुछ है बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स इसके. Why should countries indulge in trade with each other? So trading leads to efficient allocation and utilization of resources. Not trading with each other would be inefficient way of distributing of resources. There would be higher costs, inflation, etc., poverty, etc. But then there are cons as well. See, economics is not the only thing. We are human. There are other things as well. One of the cons would be that you would lack self-reliance. This causes dependence. Now, if you are dependent on, say, for example, India is dependent on China for some reason. Now, at the time of war, and war is a reality, it can happen between 2 countries, China would have hegemony. Say, for example, India is dependent on GPS for navigation. ठीक, हम बोलेंगे comparative advantage US का ही यूज़ करेंगे. Now,
India somehow ends up in a war with, say, Qatar. Qatar is an ally to US, or with Turkey. Turkey is an ally to US. Would US give GPS services at that time? India faced this problem during, I think, Kargil war. India faced this problem because Pakistan is much more aligned to US as compared to India. There are recent dynamics as well, but by and large, historically, Pakistan has been a US ally. तो ऐसे मौकों पे क्या होगा? So that's why India developed its own navigation system, Navik, IRN, SSS. So that's one interesting thing. Now, then there are restrictions on trade which distort this comparative advantage, tariff, non-tariff barriers. But the truth is that these cons can be managed by greater openness in trade. That is finally. So what does that mean? That means as a thumb rule, there should be open economies. But sometimes you might need to tweak. Sometimes you might need to do it. Now, moving swiftly on, when we talk about, we have settled the first question. अब हमारा आंसर आ गया क्यों हमको ट्रेड करना है. अब जब ट्रेड करते हैं तो पहला मसला क्या आता है? पहला मसला आता है एक्सचेंज का मीडियम क्या होगा, राइट? आप विद इन इकोनॉमी करेंसी को यूज़ करते हैं. सो यू प्रोड्यूस क्लॉथ, समवन एल्स प्रोड्यूसेस आटा. नाउ अगर रुपीज़ हैं, आपकी करेंसी रुपीज़ है, सो यू गिव हिम रुपीज़, ही गिव्स यू आटा. He gives you rupees, you give him cloth. So rupees becomes a medium of exchange. Why would a Chinese accept rupees? वो करेगा क्या उसका चाइना में? Why would a Russian accept rupees? Why would Americans accept? So different economies have different currencies. This is a reality. So we would need to exchange these currencies, right? We would need to exchange these currencies. And that's where comes our first concept, exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज जब करते हैं, इसे ना $1 is 80 rupees or something like that. So exchange rate would be the rate at which one currency can be swapped or exchanged for another. So if you have $1, you can swap it for 80 rupees, right? But why 80? Why not 90? Why not 346? Why not 0? Why not 1? Makes sense, $1, 1 rupee ऐसे होना चाहिए, right? Turns out there are reasons why it's 80, and you might have heard in news that rupee is falling or the exchange rate is rising. All of these things you might have heard. This value is determined by a lot of factors, and these factors sum total में हम उसको कह सकते हैं there are three systems of exchange rate determination. Let's start with an outdated one first. Fixed exchange rate. बैंक ने डिसाइड कर दिया, RBI ने, कि $1 20. ख़त्म बात. दो बैंक को 20 रुपये आपको डॉलर देगा. गए आप HDFC के पास, HDFC को बोले दो भाई. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसमें सेंट्रल बैंक डिसाइड कर देता है. हिंदुस्तान में RBI, बाकी जगहों पे बाकी. ये हिंदुस्तान में 91 तक यूज़ होता था. ये एक आउटडेटेड सिस्टम है, नॉट गुड इकोनॉमिक्स. वाई? यू कैन सी, अगर बेसिक्स भी पता है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे. मार्केट ड्रिवन नहीं है ये सोल्यूशन. आप फिक्स कर रहे हैं, मार्केट को फिक्स करने दो. एक यूजुअली मार्केट ड्रिवन सोल्यूशंस आर गुड. नाउ देयर वुड बी फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल मार्केट ड्रिवन, जो मैंने अभी बोला, दैट्स कॉल्ड मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसमें क्या होता है, अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ आ गया है, this is cake walk for you. This exchange rate is determined by market forces. मतलब डिमांड एंड सप्लाई. अब हिंदुस्तान में डॉलर्स की कितनी डिमांड है और डॉलर्स की कितनी सप्लाई है, वैसे ही रेट होगी उसकी. जैसे अनाज, चावल की कितनी सप्लाई है, चावल की कितनी डिमांड है, वही चावल का कॉस्ट डिटरमिन करेगा. चावल की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, कॉस्ट बढ़ेगा. चावल की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, कॉस्ट गिरेगा, राइट? तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है हिंदुस्तान में, सप्लाई कम है, तो डॉलर की कीमत बढ़ेगी, राइट? अब डॉलर की डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, तो डॉलर की कीमत गिरेगी हिंदुस्तान में. अच्छा, हिंदुस्तानी डॉलर डिमांड क्यों करेगा? पहली बात तो ये, वाई वुड एन इंडियन डिमांड डॉलर? ही नीड्स रुपीज़. बट से फॉर एग्जाम्पल
Indians like, say, gold. Indians actually like gold. दिवाली पे गोल्ड, हर एक चीज़, कश्मीर में शादियों में गोल्ड. क्या कर कोड मॉल, ही नीड्स गोल्ड. तो अब गोल्ड तो निकलता नहीं है कश्मीर में, राइट? कश्मीर डज नॉट प्रोड्यूस गोल्ड. टर्न्स आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड बहुत कम है. सो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर. से साउथ अफ्रीका से गोल्ड आ रहा है, से घाना से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, वेयर एवर. सो यू हैव टू पे देम इन डॉलर्स. लेट्स अज्यूम डॉलर्स में ले रहे हैं पेमेंट. That means the importer, which is importing gold from South Africa, has to pay in dollars. He needs dollars. So a demand for dollars has been created in India. Who would supply these dollars? Who would supply these dollars? Take for example another thing, rice, cotton. Ab cotton, Indians are producing. Indians are producing cotton, a lot of cotton. पूरा हिंदुस्तान ने कॉटन कपड़ा पहना. कपड़े कॉटन के, गद्दे कॉटन के, चादर कॉटन के, पर्दे कॉटन के. उसके बाद भी कॉटन बचा. क्या करे इसका? देखा कि बगल में एक मुल्क है, उसमें है नहीं कॉटन, बोला उनको बेच दे. तो वो क्या पे करेंगे? वो डॉलर पे करेंगे. द वे इंडिया पे डॉलर्स फॉर गोल्ड, दे वुड पे डॉलर्स फॉर कॉटन. सो एक्सपोर्टर्स गेट यू डॉलर्स, importers need these dollars. So demand is also created, supply is also created. Now export ज़्यादा है या import ज़्यादा है, वो डिटरमिन करेगा डॉलर की डिमांड और सप्लाई कितनी है. डॉलर की डिमांड और सप्लाई, और वही डिटरमिन करेगा एट द एंड ऑफ द डे कि एक्सचेंज रेट क्या है. नाउ इफ द एक्सचेंज रेट इज लो, द इम्पोर्टर्स वुड परचेज मोर एंड मोर डॉलर्स. इम्पोर्ट जिनको करना है उनको 20 ही रुपये देने पड़ रहे हैं $1 के लिए, तो और लेंगे. उनको पता ही अगले दिन 80 होगा, कल भी 80 था, आज 20 है, तो सारे डॉलर्स लपेट लो डॉलर्स. सो देयर वुड बी हायर डिमांड फॉर डॉलर्स एंड एट लोअर रेट्स एक्सपोर्टर्स विल सेल लेस डॉलर्स. उनका नुकसान हो जाएगा. सो देयर वुड बी लेस सप्लाई. तो ये हमने डिमांड एंड सप्लाई में देखा. देयर वुड बी एन अपवर्ड स्लोप इन द सप्लाई कर्व, देयर वुड बी अ डाउनवर्ड स्लोप इन द डिमांड कर्व, एंड देन दीज टू lines would intersect at a point that is the market equilibrium point, and at that point that is the exchange rate. So the exchange rate at equilibrium is the market exchange rate. So it would keep on fluctuating depending upon demand and supply, because demand and supply keeps on fluctuating. और इसी वजह से इसको floating exchange rate भी कहते हैं. And of course there are other factors as well. हमने सिर्फ importers और exporters को देखा, but needless to say there can be other factors as well. Now broadly speaking these are the two ways. यही दो तरीके हैं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के. लेकिन आरबीआई क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक ने अब सारा काम छोड़ दिया था, मार्केट को करने तो जो करना है. टर्न्स आउट मार्केट इज रूथलेस एंड मार्केट लीड्स टू इनइक्वालिटीज. ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. खैर, sometimes banks need to उनको कसना पड़ता है शिकंजा इकोनॉमी का. they have to deal with the economy at times. They would manage this exchange rate. It is floating, it is market driven, but somehow managed. So it is floating in the sense के floating exchange rate system के ही ये जो उसूल है उनको फॉलो करता है. अलबत्ता आरबीआई क्या करता है, आरबीआई डिटरमिन नहीं करता रेट. आरबीआई एज ए प्लेयर मार्केट में दाखिल हो जाता है. आरबीआई भी सप्लाई करता है डॉलर्स. अब जब आरबीआई ने सप्लाई किए डॉलर्स या आरबीआई ने डिमांड किए डॉलर्स, आरबीआई इज अ बिग इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक है एक कंट्री का, तो किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक वो बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा करेंसी होता है. So it enters the market as a player, creating demand and creating supply, and thus affecting market exchange rate. So it is in a way managed, but it is still market driven. So this is kind of like a marriage between the other two systems. So RBI does it, and central banks around the world do it, and it is needed at times. When we would understand the concepts, we would also find examples where this would be needed. And then there are open market operations, etc. We'll look at them. Now here comes an interesting phenomena. When we talked about GDP,
So we talked about aggregate cost of the product of an economy, right? Cost in which currency? हिंदुस्तान रुपीज़ में, यूएस डॉलर्स में, ब्रिटेन में पाउंड, राइट, यॉन एट्सेट्रा, रियाल, दिरहम, तो कौन सी करेंसी में? सो यू कैन सी वंस वी हैव डिटरमिन्ड एन एक्सचेंज रेट, इट्स ईजी टू कन्वर्ट, राइट? जीडीपी इन रुपीज़, आपके पास एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो उसको करो डिवाइडेड बाई 80, मिल गया आपको डॉलर्स में जीडीपी, राइट? अब हर एक इकॉनमी का जीडीपी डॉलर्स में निकाल लो. अब कंपैरिजन भी हो सकता है कौन सी इकॉनमी बड़ी है, कौन सी इकॉनमी छोटी है. नाउ लेट्स इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं. मार्केट एक्सचेंज रेट जो है, इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, अभी हमने देखा. लेकिन जीडीपी जब हमने समझा था, जीडीपी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इम्पोर्ट्स के साथ लेना देना नहीं है इसका, राइट? जीडीपी इज नॉट इम्पोर्ट ड्रिवन. मार्केट एक्सचेंज इज अफेक्टेड बाय इम्पोर्ट्स, so there is some kind of anomaly here. So market exchange rate largely depends upon imports. GDP doesn't include imports. Market exchange rate depends upon exports, while exports for countries like India is very less. China has huge exports, sorry. There are export driven economies around the world, but India is not one of them. In fact, third world countries are not one of them. Low या middle income countries बहुत कम होता है, 10% के आसपास, 5% के आसपास ऑफ जीडीपी होता है उनका एक्सटर्नल ट्रेड. नाउ यू कैन सी मार्केट एक्सचेंज रेट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस ऑफ कन्वर्जन इन सच केसेस. समथिंग हैज़ टू बी वर्कड आउट. एंड हियर कम्स अनदर कंसेप्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड एक्सचेंज रेट. नाउ व्हाट इज दिस? ये कौन सी चिड़िया है? ये हमारा कंसेप्ट कॉम्प्लिकेट करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन इसका इकोनॉमिक्स में यूज भी है. परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट वुड रेफर टू द प्राइस लेवल इन से रुपीज टर्म फॉर इंडिया नीडेड बाय एन इंडियन टू बाय सेम कंजप्शन बास्केट विच इज अवेलेबल फॉर $1 इन यूएस. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको ईजी करते हैं. हम निकालेंगे यूएस और इंडिया में कॉमन कंजप्शन बास्केट क्या है. क्या वो भी खाते हैं, हिंदुस्तानी भी खाते हैं? क्या वो भी यूज़ करते हैं, हिंदुस्तानी भी यूज़ करते हैं? देखो, उनको भी पेट्रोल चाहिए, हिंदुस्तानी को भी चाहिए. उनको भी पैरास्टामोल चाहिए, हिंदुस्तानी को भी चाहिए. उनको भी दूध चाहिए, हमको भी चाहिए. सो वी कंस्ट्रक्ट अ कॉमन कंजप्शन बास्केट बिटवीन टू इकोनॉमीज. नाउ वंस वी हैव कैलकुलेटेड दैट, सपोज द कॉमन प्रोडक्ट्स which Indians and Americans are using, they cost Americans $1, right? They cost Indians 40 rupees. So exchange rate is $1 is equal to 40 rupees. हो गया, simple. For converting GDP to GDP in dollars, in India's case and in many economies, not just India, it is better to use purchasing power parity than market exchange rate. And the thumb rule here is as long as the consumption basket is more than exports, which in India's case is true and in many other economies. Now, if a country's GDP mostly consists of goods and services जो domestically ही consume होते हैं, export नहीं होते, then purchasing power parity would give a more accurate measure of its economic output and living standards. अब अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तब ये अच्छा नहीं होगा पीपीपी को यूज़ करना. So if a country produces lot of goods for export, the prices of those goods may be influenced by global market forces than domestic factors. तो पीपीपी उस केस में लेस रिलायबल होगा. यहाँ पे हमको क्या समझने की ज़रूरत है कि मार्केट एक्सचेंज रेट में ग्लोबल फोर्सेस भी वर्कआउट कर रहे होते हैं. सो वो एक्यूरेट पिक्चर नहीं देता. सो से फॉर एग्जांपल 80 रुपये इज इक्वल टू $1 के हिसाब से हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर लेवल पे होगा, जिसके हिसाब से इट माइट टर्न आउट भी खाने को नहीं है लोगों के पास कुछ, बट एक्चुअली में एक्सचेंज रेट 20 रुपये भी हो सकती है. सो उस हिसाब से दे वुड बी लेस पुअर. सो ये बहुत ज़रूरी है इसको ऐसे देखना.
So usually when exports are of the tune of 50% of GDP, then market exchange rate is better to compare GDPs etc. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो मार्केट एक्सचेंज रेट ही यूज़ होगा, मेक सेंस एज वेल. अलबत्ता जब जीडीपी कंपेयर करना होता है इकोनॉमीज का तो पीपीपी इज़ बेटर. इंडिया के केस में परचेजिंग पावर पैरिटी वाली एक्सचेंज रेट इज़ वे लोअर देन मार्केट एक्सचेंज रेट, बिकॉज हिंदुस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है. देयरफॉर जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट इज़ वे लेसर देन जीडीपी एट purchasing power parity. So in GDP market exchange rate terms, India is like 5th or 6th around the world. Purchasing power parity में 3rd around the world. तो इसीलिए इस फंडामेंटल को भी समझना ज़रूरी है. In our next session we would look at balance of payment accounts, which is again a very interesting, क्योंकि ये जो हमने अभी ट्रेड किया ना, तो इसका कहीं अकाउंट रखना है ना, कितना डॉलर आया कितना डॉलर गया. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, दे कैन ओनली फंड देयर एक्सपोर्ट्स फॉर 1 वीक, या श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस, दे आर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोथ केसेस में. सो वी वुड लुक एट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स नेक्स्ट टाइम वी मीट इंशाल्लाह. सो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, so please mention that in the comments. I'll try to respond as early as possible. Thanks for being here. Assalamu alaikum.